Anyway, very good evening, all the participants. Today we'll start with voluntary liquidation. So I would request C. Roop Kiranji. Roop Yes, sir. Kiranji, Yes, please yes, sir. briefly tell us about voluntary liquidation. Number Uh, one, first question. as Why the term corporate person is used in case of voluntary liquidation instead of corporate debtor? because no debts. Right. Uh, Because when he is voluntary not a corporate liquidation debtor, because can be no debts, he is started a only in corporate case person. of a company which is debt-free company. Yes, sir. And whether the terms corporate person and corporate debtor are synonymous or they are different. They are different, sir. They are different. Whether corporate person is a more wider term as compared to corporate debtor or corporate debtor is a wider term. Corporate person is a wider term, sir. Right. So corporate person may include a corporate debtor, but corporate debtor may not include a corporate person. Yes, sir. ठीक है? अच्छा. Whether an application once made under voluntary liquidation can be withdrawn? There is no express provision, Right. but Very correct. can be withdrawn depending upon the circumstances. Right. But you can always make an application under section 60, subsection 5, which allows the adjudicating authority to adjudicate on any questions of law or facts arising out of CIRP or liquidation. So section 60, subsection 5 gives some light on this. And who has the powers in this case of voluntary liquidation? Corporate person. Suppose corporate person is playing a fraud, then what will happen? Liquidator has to write to executing authority Right, explaining very correct, the. very correct. Mhm. And most of the provisions regarding mode of sale, making sale strategy, etc., these decisions are taken by whom? Liquidator or corporate person? Liquidator in consultation with corporate person. Right, very correct, very correct. And suppose the corporate person wants to replace the liquidator. So can it do so? Yes, sir, he can do Right. at any stage, at any point of time. And but now suppose the voluntary liquidator feels that the company will not be in a position to pay the debts. Then what the voluntary liquidator will do? If he is not in position to pay the debts, Right. then he has to write to educating authority. Right. Very correct. So although the role of adjudicating authority is very limited in case of voluntary liquidation, because the idea is it's a debt-free company, so there should be minimum interference. So Yes, sir. basically, the corporate person is given free way in case of voluntary liquidation. Most of the decisions can be taken. Is there a concept of declaration in case of voluntary liquidation? Yes, sir. Yes. Declaration Is there any by the format? format. Like in case of PPIRP, there is a format, Form P6, Yeah. I think. But Yes, here, yes. in case of voluntary liquidation also, is there Hmm. any format or there is no format? No format, sir. There is no format. Very Hmm. correct. Uh, Another question, whether in the format, whether in the particulars to be covered under declaration, is there any recent change in liquidation regulations? Recently, there is a change in voluntary liquidation regulations which stipulate that in case of declaration, some additional information is to be disclosed. Can you Hmm. describe this? No What idea, is sir. that additional information to be disclosed? No idea, sir. Okay. So that is regarding preservation of records Okay. and litigation also. So Hmm. pending litigation also, position of pending litigation is to be covered, and then Hmm. that the corporate person has made sufficient provision for maintenance of records post voluntary liquidation. So these are the two things which are to be included in the declaration. So this is a brief about the voluntary liquidation. So Sir, with this when did background, this change come? yes, When did this change come? I think it came in February 2025. February 25th. So That that is is a part of included our in our syllabus. syllabus. Yes, 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 yes. Okay. That is a part of our syllabus. Okay. Okay, sir.
And I have shared one PPT also, which contains the recent amendments. I have shared in the group. Okay, sir. Like in case of CIRP, there are changes in custody and control provisions. So similarly, here also, there are some changes. I'll share it again also, no issues. So now, let us go to voluntary liquidation. Very simple, only one section. And then regulations. So section number 59. 59, very correct. 392. Section 1, but more than 40 regulations, sir. Yes. And is the concept of moratorium applicable? In case of voluntary liquidation, is the concept of moratorium applicable? Yes, sir, applicable. No. No. Pending suits can be continued, but a new suit cannot be. Voluntary liquidation says subject to section 35 to 53. Okay, sir. So it does not include 33 and 34. 33 subsection 5 talks of voluntary moratorium Okay, during liquidation or voluntary liquidation. So it says section 35 onwards they are covered. Okay. So with this background, we can start. Section 59. So section 59. So Rup Kiranji, please read this. What it Okay, says. sir. Yeah. Just yes. I hope it is visible. No, sir. Not yet, sir. No. No, Just not yet. just a minute. अच्छा मैं शेयर नहीं किया क्या? Now it is visible. Yes, sir. Yes. पढ़िए जरा. A corporate person who intends to liquidate itself voluntarily and has not committed default, any default, the voluntary liquidation proceedings under the provisions of this chapter. So suppose there was a default in a company, say in 2010, right? Then that default was made good, and after that there is no default. So whether that company can go in for voluntary liquidation or not. As on date, there is no default, but the company committed a default in 2010. So in that situation, whether that company will be able to go in for voluntary liquidation, yes or no? Yes, sir. The The answer is time yes. period. The answer is Time. yes, because this it has to be seen on the date of application basically, Yes, sir. on the date of declaration only. Suppose there was a default 10 years ago or 5 years ago or even 1 year ago, but now that default no longer exists. So then that is no longer an impediment. It has not committed any default. So this thing, this applicability has to be seen at the time of making of declaration, right? So any default does not mean any default in say 100 years or since in incorporation. May initiate voluntary liquidation proceedings under the provisions of this chapter. Okay, yes, please. The voluntary liquidation of a corporate person under subsection 1 shall meet such condition as requirements as may be specified by the board. Regulation 3 to 41. Without prejudice to subsection 2, voluntary liquidation proceedings of a corporate person in respect of a company shall meet the following conditions, namely, a declaration from majority of the directors of the company verified by an affidavit stating But that. Rupkiranji, why they are referring to only company? Why not to LLP here? Because corporate person includes LLP also. Yes, yes, sir. So why they are referring to company alone? There is no mention in section 59 for LLP. What could be the logic?
Actually, the provisions regarding this voluntary liquidation, they were lifted straight away from Yeah, yeah. Companies Act. Yes, sir. Yes. Voluntary winding up. Mm. So they included it here. But then they thought that okay, LLP has been excluded. So then they tried to cover it by way of regulations. Yeah, So there they have LLP, given majority of designated partners. There they have given. right, Yes, right. sir. So declaration, yes, declaration from padhiye. A declaration from majority of the directors of the company verified by an affidavit stating that they have made a full inquiry into the affairs of the company and they have formed an opinion that the company has no debt or that it will be able to Hmm. pay its debts in Hmm. full from the proceeds of assets to be sold in the voluntary liquidation. Hmm. And the company is not being liquidated to defraud any person. Hmm. So can you elaborate on this? Company is not being liquidated to defraud any person. Ah, What yes, could be the sir. logic? And what is the intention behind this? Maybe the company may be having some assets, so they can liquidate and the director, somebody may purchase No, no, those no. assets. My question is, suppose there is no liability, Yes, sir. then where is the need to defraud any person? Why this declaration is needed? The idea is because once a company is liquidated, once it is wound up, once it is dissolved, the traces normally disappear. Maybe that they are Mm. playing a fraud, Acha. they are not Yeah. having any liability, but they are fearing some liability may come in the years In to future. come, and they want to vanish from the scene before that liability comes. Okay, sir. So it's they say that there is no underlying intention, bad intention. Mm. Yes. The declaration under subclause A shall be accompanied with the following documents, namely audited financial statements and record of business operations of the company for the previous 2 years or since its incorporation, whichever is later. Hmm. A report of the valuation of the assets of the company, if any, prepared by a registered valuer. So now, suppose there are no assets in the company, then also valuation is required or not? Not required, sir. Right. If assets are, it is given, no? If Right. any, report of the valuation of assets, if any. That Suppose there means is if only cash and bank balance, then valuation is no required or valuation, not? sir. No valuation, sir. Cash and bank balance, there is no valuation. Right. Very correct. Yes. Within 4 weeks of a declaration under subclause A, there shall be a special resolution of the members of the company in a general meeting requiring the company to be liquidated and appointing an insolvency professional to act as the liquidator, Hmm. or a resolution of the members of the company in a general meeting requiring the company to be liquidated voluntarily upon expiry of the period of its duration, if any, fixed by its articles or on the occurrence of any event in respect of which that the company shall be dissolved as the case may be, and appointing an insolvency professional to act as the liquidator. So here, what is the difference between 1 and 2? See 1 and 2, what is the difference? C1 says special resolution, C2 says resolution. Second one is expiry period, sir, one period, because they will form with some intention, and once that purpose is over, they close the company. Right. So in that case, ordinary resolution is sufficient instead of special Special resolution. resolution. Yes. So like Provided SPVs does like this. Yes, Anita ji? Like SPV, Right. which Suppose a generally company form has been formed for a specific for purpose, specific say purpose. for the execution of a particular project. Mm-hmm. Project. And the Project is articles over, contain a clause that, okay, once that period is over, once that project is completed, the company shall be dissolved. So in resolved. that case, ordinary resolution and that period, that project has been executed fully, it has been fully commissioned. So in that case, ordinary resolution will be sufficient. Yes, please. I will tell you one example if you permit me, sir. Sure, sir, sure. Then
we had this one account, this World Cup 1986 in Right. Kolkata, in one Bhawanipur branch, when Mhm. Jagmohan Dalmia was the president. So at that time, like this, it was opened. Then after completion of the that World Cup 1986, that account was closed. So Right. that company was that it was opened as a special purpose Right. vehicle. Very correct. Yes, please. Yes, sir. Provided that the company owes any debt to any person, creditors representing two-thirds in value of the debt of corporate of approve the resolution passed under subclause 2, subclause C within 7 days of such resolution. So there could be a case where some debts are there. It could be a debt-free company also, or there is a position that it owes any debt to any person. So in that case, the creditors shall also approve the resolution. Creditors representing two-thirds in value Two-thirds of in the debt value. of the company, right? Okay, And sir. that has to be done within 7 days of such a resolution. Yes. The company shall notify the registrar of companies and the board about the resolution under subsection 3 to liquidate within 7 days of such resolution or the subsequent approval by the creditors as the case may be. So here, is the company not required to notify the adjudicating authority? Not now, sir. In the end. Yes. So at this stage, the Yes, sir. notification to adjudicating authority is not required. Yes, sir. So only registrar of companies and board. Yes, please. Subject to approval of the creditors under subsection 3, the voluntary liquidation proceedings in respect of a company have commenced from the date of passing of the resolution under subclause C of subsection 3. Right. So there is a deeming fiction here. Yes, sir. There Deemed is no occurrence. liquidation order. Like Yes, in sir. case of normal liquidation, there is a liquidation order. And that Yes. order is seemed to be a notice of discharge to the employees. Yes. Right? Yes, But yes. here, there is a deeming fiction. And that deeming fiction says that voluntary liquidation is deemed to have commenced from the date of passing of the resolution under subclause C of subsection 3. Yes. Now, let us take a case where a company has debts. Okay. Debts are 3 crores. Yes, sir. Okay. And the company was formed for a specific purpose. So, Yes. question number 1, whether ordinary resolution is required or special resolution. I hope you have understood the case. A Special company was resolution, sir. formed for a specific duration or for a specific purpose, and that purpose is fulfilled. Normal resolution, sir. Eh? Normal. Only resolution. Only resolution, right? Very correct. Yes, sir. And there are creditors worth 3 crores, Yes, sir. right? So, how many creditors should approve? Need to approve? 2 crore. Two-third. Two-third, right? 2 crores. Okay. And suppose the ordinary resolution was passed on, say, 15th of August. Okay? And creditors approved it on 20th of August. Yes, within 7 days, no, sir. So, what is the date of commencement of voluntary liquidation? 15th August or 20th August? 20th August. 20. No, it is 15th of August. 15th, okay. It says from dating of Date of passing, passing yes, of the yes. resolution under clause C. And what is the date of passing of the resolution? 15th, yes. Right? So, and now you may ask me another question. Suppose the creditors do not approve, then what will happen? Then voluntary liquidation will not commence. Yes, sir. Right? Yes, sir. I hope it is clear. Yes, sir. Yes. Please. The Are you clear, provisions, Upilenji? the provisions of sections 35 to 53 of chapter 3 and chapter 7 shall apply to voluntary liquidation proceedings with such modifications as may be necessary. So, I was asking this question whether the concept of moratorium will be applicable. So, this says provisions of section 35 to 53. So, they have deliberately excluded section 33 and 34. Section 33 subsection 5 talks of a particular type of moratorium. Although the word moratorium has not been used, but section 33 subsection 5 says subject to section 52, right?
Yes, sir. So Sir, there is if there is no moratorium, then some stakeholders, somebody interested persons, they will go to court and get some stay like that. right. Hmm. So whether litigation Right. can go on during voluntary liquidation? The answer is yes. Hmm. And But whether existing new suppose a litigation. company is already into litigation, so then whether voluntary liquidation Yes. can be initiated, Yes, sir. it can be initiated. And there could be a case where the company is dissolved, but the litigation is still going on, right? Okay, sir. So we'll understand that concept when we read the concept of this compliance report. Okay, In the sir. compliance report, they say pending litigations and what is the provision they have made. Right? Next. Where the affairs of the corporate person have been completely wound up and its assets completely liquidated, the liquidation application to the adjudicating authority for the dissolution of such corporate, the liquidator has to apply to the adjudicating authority for the dissolution of such corporate person. Right. So, but in case of normal liquidation, there is a concept of sale of the company as a going concern. So Yes. whether there is any such concept here? No, sir, because they themselves wants to liquidate it. Right. So there So is there no is no concept question of of sale of it as a going concern. yes. So it has to be dissolved also. Yes, sir. Because in case of normal liquidation, there could be a closure of liquidation process, right? Yes, sir. And there could be dissolution. But here, the only recourse is dissolution. Yes. The adjudicating authority shall, on an application filed by the liquidator under Section, just a minute. subs. हाँ, Next ये page, sir. सेक्शन इसमें नीचे आ रहा है ना? Next page. ये Subsection 7. नहीं, सेक्शन में यहाँ नीचे आता है कुछ अंडर सेक्शन. हाँ, उसके बाद में एक ही लाइन है सर नीचे हाँ. नेक्स्ट पेज में. हम्म. Under subsection 7, हम्म. pass an order that the corporate debtor. Just a minute. हाँ. Subsection 7, pass an order हम्म. that the corporate debtor shall be dissolved from the date of that order and the corporate debtor is dissolved accordingly. सर इसमें एक केस है सर. डेट ऑफ द ऑर्डर नहीं अपलोड करते हैं ना एनसीएलटी में वेबसाइट में, उस दिन का बोल के केस में आया. So what is that case? Can you explain? वो तो याद नहीं है, आज कोई ही बात पढ़ा नहीं. मैंने. You can write in the group. I will write. You can cite in the group that case name. Yes. वेबसाइट में अपलोड जब हुआ उस दिन का डेट से लेना, ऐसा है. ठीक है सर. ओके. A copy of an order under subsection 8 shall within 14 days from the date of such order be forwarded to controlling, ये हो सकता है controlling authority with which the corporate person is registered. कोई हाँ. ROC. हाँ. आरओसी भी हो सकता है, सेबी भी हो सकता है, कोई हाँ सर. इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी भी हो सकता है, Yes, जिसके साथ भी वो रजिस्टर्ड है. yes, sir. है ना? तो ये हो गया हमारा सेक्शन 59. नाउ लेट अस गो टू लिक्विडेशन रेगुलेशंस. यस. Sir, I have a question. Yes, please. Like one company, they are voluntarily liquidated. Now Right. income tax has sent them notice. What is And the income tax has notice, send a okay. notice, I mean, Okay. demand notice. Actually, there is a provision in Companies Act that even when a company is dissolved and its name has been struck off, so still it can be revived for a period within a period of 20 years. So the Okay. company will be revived in that case. Mm-hmm. But normally, in case of voluntary liquidation, they take an affidavit from the directors that in case any liability arises, directors will be personally responsible. Okay. Okay. But if the directors are also not traceable, so then in that case, the company shall be revived and then notices sent accordingly. So there are many cases where the company is revived. Okay. Okay, sir. Just now you said now there is intention to defraud. Maybe Right. this is that point. Right. Mm. Yes, please. Short title and commencement. These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India Voluntary Liquidation Process Regulations 2017.
These regulations shall come into force on 1st April 2017. These regulations shall apply to the voluntary liquidation of corporate persons under Chapter 5 of Part 2 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Definitions. In these regulations, unless the context otherwise requires, code means IBC code. Contributory means a member of a company, partner of a limited liability partnership, and any other person liable to contribute towards the assets of the corporate person in the event of its liquidation. Corporate voluntary liquidation account means the corporate voluntary liquidation account operated and maintained by the board under Regulation 39. So can you explain what is this corporate voluntary liquidation account in brief? ये जो लास्ट में पैसा बचता है अनक्लेम्ड या जो प्रोसीड्स बच एक्सेस प्रोसीड्स बच जाते हैं then that is created in this account, corporate voluntary liquidation account. In future anybody claims, then at that time that amount will be paid from this account. Suppose somebody has filed a claim, but now he is no longer traceable. The company issued a check also, but it came back. So there may be some unsatisfied claims. So all that money is Yes. shifted to this corporate voluntary liquidation account. And after 15 Because years you have it to is close the things. Right? Otherwise after- it will go on. yes sir. Then after 15 years that amount is transferred to consolidated fund of Right. India. Very correct. Yes, please. Liquidation commencement date means the date on which the proceedings for voluntary liquidation commence as per section 59(5) and regulation 3(3). Now, so regulation 59(5) we have already read, and regulation 3(3) we will just now read. Yes. Yes. Registrar shall have the same meaning assigned to it under section 275 of the Companies Act 2013 or section 2 subsection 1 clause S of the Limited Liability Partnership Act 2008 or the authority administering the act under which the corporate person is incorporated as applicable. Yes. Section means a section of the code, and stakeholders means the stakeholders entitled to proceeds from the sale of liquidation assets under section 53. Now, Sir, so here, now one question here, whether stakeholders and contributories are one and the same or they are different? मेरे मुंह से भी वही निकल रहा था वो आपको बोल दी. So there is thin line of difference, sir. Right. Stakeholders means as here they get money from the sale of assets. Contributors means they are shareholders, not stakeholders. They have put their capital into the company. Right. Very correct. Yes. The term liquidation in these regulations refers to voluntary liquidation. Unless the context otherwise requires, words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the code shall have the meanings assigned to them in the code. Very correct. Now regulation number 3. Chapter 2, Commencement of Liquidation. Initiation of liquidation. Without prejudice to section 59(2), liquidation proceedings of a corporate person shall meet the following conditions, namely. So here they say without prejudice to section 59(2), because in section 59(2) they have described regarding company. Yes, sir. Here LLP. Yes. A declaration from majority of the designated partners if a corporate person is a limited liability partnership. But Rupkiran ji, in case of pre-pack insolvency resolution process, declaration is from the designated partner, majority of designated partners or majority of partners? Because in case of LLP, PPIRP can be initiated, yes or no? Yes, sir. So in case in case of an LLP, suppose a LLP wants to initiate this PPIRP process. So in that case, the declaration shall be from majority of the partners or from majority of designated partners? Majority of partners. Partners, yes. So there is a very thin distinction, and this question has been asked in the examination also. Okay. So here it is designated partners, majority of designated partners. There it is majority of partners. There could be say 100 partners in an LLP. So then in that case there will be 51. But here
It is from majority of designated partners. That is the difference. Yes, sir. So you have to specifically note this thing. Individuals constituting the governing body in case of other corporate persons. So what could be the example? Individual constituting the governing body. Individuals. Suppose it is some authority, say DDA, municipal authority. अच्छा, okay. है ना? Hmm. So in that case, there is a governing body. In case of an authority, it is a governing body. Suppose it is established under some statute, so it is a corporate person. Okay. है ना? Hmm. So in that case, majority declaration has to come from majority of the individuals constituting the governing body. In case of company, it is Directors. directors. In case of LLP, it is designated partners. Yes. And in case of any other corporate person, it is individuals. Yes, sir. Yes, please. As the case may be, Hmm. verified by an affidavit stating that they have made a full inquiry into the affairs of the corporate person and they have formed an opinion that either the corporate person has no debt or that it will be able to pay its debts in full from the proceeds of assets to be sold in the liquidation. Right. The corporate person is not being liquidated to defraud any person, and the corporate person has made sufficient provision to meet the obligations arising on account of pending matters mentioned in subclause 3 of clause B. The declaration under subclause A shall be accompanied with the following documents, namely Yes. audited financial statements and record of business operations of the corporate person for the previous 2 years or for the period since its incorporation, whichever is later. A report of the valuation of the assets of the corporate person, if any, prepared by a registered valuer, and disclosure about pending proceedings or assessments before statutory authorities and pending litigations in respect of the corporate person. So all these things have to be covered in the ये पॉइंट लास्ट पॉइंट अमेंडेड हुआ सर न्यू रेगुलेशन. हाँ अच्छा, एक और भी अमेंड हुआ. वो प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स. हाँ अच्छा. ये वाला पॉइंट, वो 5th पॉइंट. अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर. हाँ नहीं, इफेक्ट ऑफ लिक्विडेशन से ऊपर जो है ये वाला, दिस वन. हाँ, यस सर. The declaration under subregulation 1A or under section 59(3)(a) shall provide that the corporate person has made provision for preservation of its records after its dissolution. हाँ, तो ये वाला पॉइंट भी ऐड हुआ. अच्छा. ये पॉइंट कब ऐड हुआ? ये पॉइंट ऐड हुआ आपका फरवरी. हाँ. चलिए, अब इधर यहाँ पर थे हम लोग. तो डिक्लेरेशन हो गया. डिक्लेरेशन के बाद में क्या करना है आपको? विद इन 4 वीक्स ऑफ डिक्लेरेशन ये रेजोल्यूशन पास करना है ना? यस सर. ये सेम है, हमने 59 में अभी पढ़ लिया. यस सर. सेम ही है. स्पेशल मेजॉरिटी मीन्स मोर देन 3/4. राइट. And resolution means more than 50%. That is 51 and above. यस. पढ़ना सर, आगे निकल जाओ. ये तो आगे पढ़ जाएंगे. चलिए. Provided that the corporate ये भी person हो गया. owes नोटिफाई रजिस्ट्रार एंड द बोर्ड से 7 days. 59 में हमने पढ़ लिया है ना? Yes sir. और डीम टू बी हैव कमेंस्ड भी ठीक है, सेम ही है ये. Yes sir. दिस एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Explanation. For the purposes of sub-regulations 1 to 3, corporate person means a corporate person other than a company. यस, समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज कि यहाँ पर क्या लिखा है? कॉर्पोरेट पर्सन मीन्स ए कॉर्पोरेट पर्सन अदर देन ए कंपनी. हमने क्या पढ़ा है? कॉर्पोरेट पर्सन इंक्लूड्स कंपनी ऑल्सो. वो ये कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रेगुलेशंस ओनली 1 to 3. व्हाई? बिकॉज कंपनी हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन सेक्शन 59. So that is why they are using the corporate person here for other than a company. Because provisions regarding company voluntary liquidation they have been discussed in section 59 itself. और यहाँ क्या डिस्कस कर रहा है? LLP या अदर कॉर्पोरेट पर्सन. ठीक है, इसीलिए लिख दिया एक्सप्लेनेशन.
इसका ये मतलब नहीं है कि कॉर्पोरेट पर्सन मीन्स ए कॉर्पोरेट पर्सन अदर देन ए कंपनी। सो ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ दीज सब रेगुलेशंस कॉर्पोरेट पर्सन मीन्स दिस, मतलब ये है। ठीक है, चलिए ये भी फोर्थ पॉइंट पढ़िए Fourth पढ़िए। part, effect of liquidation. नहीं इफेक्ट नहीं, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ द डिक्लेरेशन, नजर आ रहा है ना आपको? नहीं फोर्थ वो इफेक्ट ऑफ लिक्विडेशन है सर। नहीं, फोर्थ से ऊपर थर्ड का फोर है। हाँ फोर्थ, द डिक्लेरेशन अंडर सब रेगुलेशन 1A or under section 59(3)(a) shall list each debt of the corporate person as on that date and state that the corporate person will be able to pay all its debts in full from the proceeds of assets to be sold in the liquidation. तो आपको क्या करना है? लिस्ट बनानी है, हाँ सर। ईच डेट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। जो डिक्लेरेशन है ना, हम्म। डिक्लेरेशन में लिखा जाएगा ये कि कौन कौन से डेट है। ठीक है, अब The ये बात declare 59(3) में नहीं लिखी, हम्म। 59(3) में नहीं लिखी ना, इसीलिए यहां कवर कर दिया। अच्छा सर। और 59(3) में ये भी नहीं लिखा रिगार्डिंग प्रेजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, हम्म। वो भी यहां दे दिया, है ना। हाँ सर। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? एक मॉडल डिक्लेरेशन बनाना चाहिए, अपने ग्रुप में एक बनाओ कि भाई अच्छा। आपके पास कोई क्लाइंट आ गया, दे हाँ, वांट टू वॉलंटरी लिक्विडेट, वो बोला है जी हमें डिक्लेरेशन बना के दे दो। तो डिक्लेरेशन आप बना लोगे इससे, बढ़ाऊंगा सर। है ना? हाँ, हाँ। बना के ग्रुप में पोस्ट करिए, उसमें ये सारे पॉइंट इंक्लूड करिए, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ईच डेट, ये फलाना, है ना। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, इफेक्ट ऑफ लिक्विडेशन। Effect of liquidation. The corporate person shall, from the liquidation commencement और date. उससे वो आइडिया कहाँ से मिल जाएगा आपको? उस डिक्लेरेशन का आइडिया कुछ कुछ आपको फॉर्म P6 से आइडिया मिल जाएगा, अच्छा। है ना। हाँ सर, हाँ सर। The corporate person shall, from the liquidation commencement date, cease to carry on its business except as far as required for the beneficial winding up of its business. हम्म। तो अब आप ये देखिए, वहां क्या बोलता है? वहां बोलता है लिक्विडेशन में कि इट शुड द लिक्विडेशन ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू बी नोटिस ऑफ डिस्चार्ज, Yes, sir. है ना। यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां क्या बोल रहा है? इट शैल सीज टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस। वहां पर क्या बोलता है कि गोइंग कंसर्न भी आप मेंटेन कर सकते हो। Yes. यहां गोइंग कंसर्न नहीं मेंटेन कर रहा। यहाँ वॉलेंटरी है ना सर, ये तो हाँ, इसीलिए इसका इसीलिए मीनिंग ही तो वही जितना है। रिक्वायर्ड है फॉर हम्म। बेनिफिशियल वाइंडिंग अप उतना ही करना है, उससे ज्यादा Yes. काम नहीं करना है। हम्म। जबकि Not, लिक्विडेशन में तो बिजनेस भी कंटिन्यू रह सकता है। जो नॉर्मल लिक्विडेशन है उसमें हाँ। बिजनेस भी कंटिन्यू रह सकता है। तो भाई अगर आपको एज ए गोइंग कंसर्न बेचना है तो गोइंग कंसर्न रखना भी पड़ेगा ना उसको। यहां हाँ। नहीं है ऐसा। हाँ जी। चलिए। Notwithstanding the provisions of subsection 1, the corporate person shall continue to exist until it is dissolved under हम्म section 59(8). हम्म, ठीक है। Chapter 3, appointment and remuneration of liquidator. हम्म Appointment of liquidator. Subject to regulation 6, the corporate person shall appoint an insolvency professional as liquidator and wherever required may replace him by appointing another insolvency professional as liquidator by a resolution passed under clause C of subsection 3 of section 59 or clause C of subsection 1 of regulation 3, as the case may be, provided that such resolution shall contain the terms and conditions of appointment of the liquidator, including the remuneration payable to him. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि वो जो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हो या रेजोल्यूशन पास कर रहे हो उसके अंदर ये भी बात आप कर दोगे, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर भी। लेट अस हैव ए लुक एट अगेन, है ना। एक बार दोबारा देख लेते हैं। अच्छा सर। रेगुलेशन 3 है ना, हाँ जी। ये रेगुलेशन 3। तो रेगुलेशन 3 में क्या बोलता है? जहां पर वो स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करता है, यहां ये देखिए, वो तब हमने पॉइंट मिस कर दिया। यहां क्या कहता है? रेजोल्यूशन पास बाई स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, एंड अपॉइंटिंग एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू एक्ट यस। एज द लिक्विडेटर। यस। तो यस। यहीं पर ही ये अपॉइंटमेंट की बात भी कर दी उसी रेजोल्यूशन में, है ना। यस सर। चलिए, और वहीं पर ही अपॉइंटमेंट भी तो बेसिकली किसने फिक्स कर दिया? शेयर होल्डर्स ने और फिक्स कर दिया, है ना। हाँ जी।
चलिए, The insolvency professional shall हाँ, within 7 days of his appointment as liquidator intimate the board about such appointment. तो यहां पर भी किसको बता रहा है? बोर्ड बोर्ड को को। बता रहा है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को नहीं बता रहा। हाँ जी। ठीक है। Eligibility for appointment as liquidator. हम्म वो सर इंडिपेंडेंट ऑफ कॉर्पोरेट हाँ, पर्सन बस वही है, वो सब रहते सिर्फ हैं उसमें वो। यह है कि वो 10% वाला क्लॉज है, बाकी हम्म। सारा सेम टू यस सर। सेम। यस सर। चलिए, नाउ 7, रेगुलेशन 7। Liquidator's remuneration. The remuneration payable to the liquidator shall form part of the liquidation cost. ठीक है, Chapter नेक्स्ट। 4. Powers and functions of the liquidator. हम्म Reporting. हम्म अच्छा, जो नॉर्मल लिक्विडेशन है उसमें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आर देयर? नॉर्मल Preliminary लिक्विडेशन में report. वेदर Preliminary प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इज देयर इन केस ऑफ नॉर्मल लिक्विडेशन? progress report. हाँ, वहां क्या होता है? वहां क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट होता हाँ क्वार्टरली हुए तो। है ना? है। तो इसमें क्या क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट है? इसका 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऐसा कुछ है सर। हम्म नेक्स्ट मंथ 10th डेट ऐसा कुछ टाइमलाइंस। 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। Forty-five days from the liquidation commencement. Regulation 9 हम्म 9 में दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 45 days है। वो तो ठीक है, मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ प्रोग्रेस रिपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को तो बताना ही नहीं ना, कॉर्पोरेट पर्सन को ही देना है सब कुछ चीजें। यस सर। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी किसको देना है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देना है क्या? किसको देना है? कॉर्पोरेट पर्सन को। हाँ, कॉर्पोरेट पर्सन। पढ़िए, ये पढ़िए 8 वाला, द लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर एंड सबमिट प्रिलिमिनरी The रिपोर्ट, यहाँ से। liquidator shall prepare and submit preliminary report, हम्म status report, हम्म minutes of consultations with stakeholders, हम्म and final report in the manner specified under these regulations. हम्म तो यहाँ पर Sub, देखिए, कोई क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात नहीं करता, स्टेटस रिपोर्ट की बात करता है। यस। Subject to other provisions of these regulations, the liquidator shall make the reports and minutes referred to sub-regulation 1 available to a stakeholder in either electronic or physical form on receipt of an application in writing, cost of making such reports available to it, and an undertaking from the stakeholder that it shall maintain confidentiality of such reports and shall not use these to cause an undue gain or undue loss to itself or any other person. ठीक है, चलिए, Preliminary report. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। The liquidator shall submit a preliminary report to the corporate person within 45 days from the liquidation commencement date. अच्छा, The जो नॉर्मल लिक्विडेशन है, नॉर्मल लिक्विडेशन में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कितने दिन में बनानी है? नॉर्मल लिक्विडेशन में पहली बात, क्या हाँ जी, इसको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनानी है? यस और नो? बनानी है सर। नॉर्मल बनानी है ना? हाँ, कितने दिन में बनानी है वहां? रेगुलेशन नंबर 13 है वहां पर, विद 60 इन days है क्या सर? 75 days 75 days, फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट। यहाँ कितने दिन में बता रहा है? विद इन 45 days। 45 days। यस। इसका आधा याद रख लेना सर। The capital structure of the corporate person, the estimates of its assets and liabilities as on the liquidation commencement date based on the books of the corporate person, provided that if the liquidator has reasons to believe to be recorded in writing that the books of the corporate person are not reliable, he shall also provide such estimates based on reliable records and data otherwise available to him. Whether he intends to make any further inquiry into any matter relating to the promotion, formation, or failure of the corporate person or the conduct of the business thereof
and the proposed plan of action for carrying out the liquidation, including the timeline within which he proposes to carry it out and the estimated liquidation costs. तो ये जो है, जो पॉइंट नंबर सी है, वेदर ही इंटेंड्स टू मेक एनी फर्दर इंक्वायरी, ये पीयूएफई ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा है कि भाई इसको लग रहा है 45 डेज में आइडिया लग जाएगा कि कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा इसमें, अच्छा। है ना? तो इंक्वायरी तो नहीं करनी है आपको। चलिए, ये हो गया, है ना? Yes. नाउ 10th, रजिस्टर्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक मिनट, इसको भी क्विकली देख लेते हैं। आप पढ़िए पढ़िए। 10. Registers and books of accounts. Where the books of accounts of the corporate person are incomplete on the liquidation commencement date, the liquidator shall have them completed and brought up to date with all convenient speed. The अब liquidator यहाँ पर shall, ऑल कन्वीनियंट स्पीड लिखा है। अगर लिक्विडेशन में क्या प्रोविजन है? लिक्विडेशन में भी ऑल कन्वीनियंट स्पीड है या कुछ और है? reasonable time. एनी रेगुलेशन लिक्विडेशन में? नहीं सर, याद नहीं। यस, विद ऑल कन्वीनियंट स्पीड लिखा है उसमें भी। लिक्विडेशन में रेगुलेशन नंबर 6 है, ओके ओके सर, विद ऑल कन्वीनियंट स्पीड। ठीक है, ठीक है सर। The liquidator shall maintain the following registers and books as may be applicable in relation to the liquidation of the corporate person. Cash book, ledger, bank ledger. तो ये सारा आपका है Yes, sir. पूरा रिकॉर्ड। Yes, sir. चलिए, एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। पॉइंट नंबर 11 पढ़िए। Engagement of professionals. A liquidator may engage professionals to assist him in the discharge of his duties, obligations, and functions for a reasonable remuneration, and such remuneration shall form part of the liquidation cost. The liquidator shall not engage a professional under sub-regulation 1 who is his relative, is a related party of the corporate person, or has served as an auditor to the corporate person at any time during the 5 years preceding the liquidation commencement date. जो नॉर्मल लिक्विडेशन है उसमें कितना प्रोविजन है? 3 जो ऑडिटर years. वाला 3 वहां भी years. 5 ईयर्स है, कुछ और है? मतलब इसको आपको कंपेयर कर करके पढ़ना है। Yes sir. वहां भी वही है, 5 बट आपको years. देख लेना है साथ के साथ में भाई वॉलंटरी लिक्विडेशन में क्या लिखा हुआ, जो नॉर्मल लिक्विडेशन में क्या लिखा हुआ। यस, अच्छा, okay sir. A professional engaged or proposed to be engaged under sub-regulation 1 shall disclose the existence of any pecuniary or personal relationship with any of the stakeholders or the corporate person as soon as he becomes aware of it to the liquidator. Consultation with stakeholders. The stakeholders consulted under section 35(2) shall extend all assistance and cooperation to the liquidator to complete the liquidation of the corporate person. The liquidator shall maintain the particulars of any consultation with the stakeholders made under this regulation. 13. Extortionate credit transactions. A transaction shall be considered an extortionate credit transaction under section 52 where the terms require the corporate person to make exorbitant payments in respect of the credit provided or are unconscionable under the principles of law relating to contracts. Public announcement by the liquidator. The liquidator shall make a public announcement in Form A of Schedule 1 within 5 days from his appointment. यहाँ पर 5 days है सर, उसमें 3 days है ना सर? किसमें? नॉर्मल लिक्विडेशन में। नॉर्मल लिक्विडेशन में भी 5 डेज ही है मेरे को। 5 days सीआईआरपी में है 3 डेज। हाँ, सीआरपी में 3 days है। लिक्विडेशन में देख लेते हैं, अगर नॉर्मल लिक्विडेशन है उसका रेगुलेशन नंबर कितना है? रेगुलेशन नंबर क्या है? 5 या 6 है?
रेगुलेशन नंबर 12 है वहां पर, विद इन 5 डेज 5 days ही है सर। है हाँ, ना? CIRP एंड फास्ट ट्रैक में 3 days है सर। है? CIRP एंड फास्ट ट्रैक में 3 days हाँ है। हाँ हाँ। हम्म, चलिए, ये हो गया। हम्म। अब चलिए, द पब्लिक अनाउंसमेंट। यस, पढ़िए। The public announcement shall call upon stakeholders to submit their claims as on the liquidation commencement date हम्म and provide the last date for submission of claim, which shall be 30 days from the liquidation commencement date. हम्म। The announcement shall be published in one English and one regional language newspaper अब with सीआईआरपी में कितना होता है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स फ्रॉम द सीआईआरपी कमेंसमेंट डेट? सीआईआरपी में विद इन हाउ मेनी डेज यू टू सबमिट द क्लेम्स? 14 डेज 14 days. है ना? हाँ और सर, लिक्विडेशन में कितना है, नॉर्मल लिक्विडेशन में? 30 30 days. डेज। यहाँ पर कितना है? 30 डेज। यहाँ पर भी 30 ऐसे days. आपको कंपेयर कर करके पढ़ लेना है, ताकि Yes उसका sir, भी याद yes. रहे दोबारा से। यस, चार्ट बनाना सर ऐसा चार्ट तो ऑलरेडी दिया हुआ है आपको। दिया। यस सर, हाँ, ठीक है बट ठीक आप है। अपना बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ वही सर। The यस। announcement shall be published in one English and one regional language newspaper with wide circulation at the location of the registered office and principal office, if any, of the corporate person and any other location wherein the opinion of the liquidator, the corporate person conducts material business operations. So सर यहाँ here, पर whether there is any process where public announcement in newspaper is not needed. अभी तक we have read various processes. prep Yes. PPIRP. So in case of PPIRP, public announcement is not there in newspapers. There is Yes, in sir. form P9, है ना? Yes sir. चलिए, proof of claim. Proof of claim. A person who claims to be a stakeholder shall prove his claim for debt or dues to him, including interest, if any, as on the liquidation commencement date. ठीक है। क्लेम्स Claims बाय by ऑपरेशनल क्रेडिटर्स फॉर्म बी। claims by ठीक है, इसको हम क्विकली कर सकते हैं। yes sir. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कौन सा है फॉर्म? फाइनेंशियल क्रेडिटर C, Form C. फॉर्म सी है, ठीक है। वर्कमैन एंड एम्प्लॉइज सिंगल है तो D सर, डी सिंगल एम्प्लॉय। और ऑथराइज पर्सन से है तो E. ई हो गया, ठीक है। और उसके बाद अदर स्टेक होल्डर्स F. एफ हो गया, ठीक है। FA विड्रॉल, लेकिन यहाँ पर उसका प्रोविजन नहीं है ना सर। हाँ, प्रोविजन नहीं है, बट आप Yes, एप्लीकेशन sir. लगा सकते हो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को Yes, sir. सेक्शन 60 सब सेक्शन 5 में। ओके सर, फॉर्म ओके। नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि प्रोविजन नहीं है, वो ये कि एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है। भाई नॉर्मली होता भी नहीं ना। Yes, एक बार वॉलंटरी लिक्विडेशन आप करना चाहते हो तो क्यों आप विड्रॉ करोगे? yes, चलिए, sir. प्रूविंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट। Proving security interest. The existence of a security interest may be proved by a secured creditor on the basis of the records available in an information utility, certificate of registration of charge issued by the registrar of companies, proof of registration of charge with the Central Registry of Securitization, Asset Reconstruction and Security Interest of India, or other relevant documents which adequately establish the security interest. और Production आपको of बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट है वो आपको प्रोड्यूस करने हैं। yes sir, ठीक है, सब्सटेंशिएशन ऑफ क्लेम कॉस्ट ऑफ, इसमें कुछ नहीं है, ये सब पुराना पुराना ही है ना। yes sir. ये सब आप दोबारा पढ़ सकते हो। वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स हो गया। वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स कितने दिन में करना है आपको? 30 days है क्या? 30 days सर। वहां पर 7 days CIRP में, हाँ, सीआईआरपी में 7 डेज। और नॉर्मल लिक्विडेशन में सर वो भी नॉर्मल 30 में भी days। 30 डेज। 30 days है वो भी। एंड सपोज क्रेडिटर्स क्लेम इज रिजेक्टेड, सो देन वेयर इज द राइट ऑफ अपील? एजुकेटिंग अथॉरिटी एडजुडिकेटिंग 5 अथॉरिटी days को ना, एज पर सेक्शन 42। ठीक विद है, इन 5 days सर, वो 1 week, विद इन 14 डेज है। 14 days। ओके सर। सेक्शन 42 में लिखा। अच्छा। लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। List of stakeholders. The liquidator shall prepare a list of stakeholders on the basis of proofs of claims submitted and accepted under these regulations, with the amounts of claim admitted, if applicable, the extent to which the debts or dues are secured or unsecured, if applicable, the details of the stakeholders and the proofs
admitted or rejected in part and the proofs only rejected. The liquidator shall prepare the list of stakeholders within 45 days from the last date for receipt of claims. तो इसका मतलब कितना हो गया? अगर फ्रॉम जो लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट है तब से वहां से कितना हो गया? 75 डेज हो गया ना? हाँ सर. 30 डेज में रिसीट ऑफ क्लेम्स हो गया, 45 डेज में आपको लिस्ट बनानी है। मतलब वेरिफिकेशन के लिए इसको मिल गया 15 डेज बेसिकली, है ना? यस सर. चलिए, तो ये 75 डेज अभी स्टेटस रिपोर्ट भेजना है. कौन सा? 75 डेज को हम भेजते हैं ना, रिपोर्ट क्या है? वो तो 45 डेज है ना, यहाँ 45 डेज. स्टेटस रिपोर्ट का आगे आएगा। हाँ सर. हम्म Provided that where no claim from creditors has been received till the last date for receipt of claims, the liquidator shall prepare the list of stakeholders within 15 days from the last date for receipt of claims. मतलब इसमें अगर ये पूछे कि भाई वेदर देयर इज एनी प्रोविजन फॉर सबमिशन ऑफ क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट, द आंसर इज नो। यहाँ पर फिर सिर्फ एक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करनी है। The list of stakeholders as modified from time to time shall be available for inspection by the persons who submitted proofs of claim. Available for inspection by members, partners, directors, and guarantors of the corporate person. Displayed on the website if any of the corporate person. Displayed on the website if any designated by the board for this purpose. सर यहाँ पर डायरेक्ट बोर्ड का वेबसाइट बोल के नहीं दिया, डिसिग्नेटेड बाय द बोर्ड बोल के दिया है सर। किसका? ये जो लास्ट पॉइंट नहीं, है ना, डेजिग्नेटेड बाय द बोर्ड मतलब आईबीबीआई की बात कर रहा है ना? हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ, डायरेक्ट ऑन द बोर्ड ऑफ आईबीबीआई बोल सकते हैं ना, बोर्ड नहीं, डिसिग्नेटेड वो आईबीबी जो वर्ड, बोर्ड का डेफिनेशन दे रखा है ना। बोर्ड इज डिफाइंड, अगर यस बोर्ड बोर्ड इज लिखा है तो बोर्ड ऑफ डिफाइंड, डायरेक्टर नहीं है। सो डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ बोर्ड फॉर बोर्ड दिस मतलब पर्पस बोल आईबीबीआई। सकते। बोर्ड का डेफिनेशन है, हाँ यस यस, सेक्शन नहीं 3 में नहीं, डेफिनेशन दे ये रखा है। वर्ड डिसिग्नेटेड बोल के जो स्पेसिफिकली दिया है वो हाँ पर्पस के लिए बोल रहा था मैं। हाँ हाँ, राइट। चैप्टर तो 6, एक्चुअली बोर्ड का तो बहुत सारा वेबसाइट है, हाँ हाँ अलग तो अलग वही है तो ना। वही तो, तो यस वो ये यस, कह रहा है कि बोर्ड एक वेबसाइट डेजिग्नेट कर देगा इस पर्पस के हाँ लिए। हाँ ठीक है सर, ठीक है। चैप्टर 6, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, मैनर ऑफ सेल. The liquidator may value and sell the assets of the corporate person in the manner and mode approved by the corporate person in compliance with provisions, if any, in the applicable statute. Explanation. Assets include an asset, all assets, a set of assets, or parcel of assets, as the case may be, in relation to sale of assets. Recoveries of monies due. The liquidator shall endeavor to recover and realize all assets of and dues to the corporate person in a time-bound manner for maximization of value for the stakeholders. Chapter 7, Proceeds of liquidation and distribution of proceeds. इसमें 33 निकाल दिया है ना सर, ओमिट हाँ, हुआ 33 है। खत्म हो गया। हाँ 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 सर। 34, all money to be paid in bank account. The liquidator shall open a bank account in the name of the corporate person, followed by the words in voluntary liquidation, in a scheduled bank for the receipt of all monies due to the corporate person. The liquidator shall pay to the credit of the bank account opened under sub-regulation 1 all monies, including checks and demand drafts received by him as the liquidator of the corporate person, and the realizations of each day shall be deposited into the bank account without any deduction not later than the next working day. The money in the credit of the bank account shall not be used except in accordance with section 53(1). ये क्या All मतलब pay, हुआ? सर वो वाटरफॉल मैकेनिज्म उसके हिसाब से देना है। वाटरफॉल, राइट। All payments out of the account by the liquidator above 5,000 rupees shall be made by checks, drawn, or online banking transactions against the bank account. Distribution. The liquidator shall distribute the proceeds from realization within 30 days
from the receipt of the amount to the stakeholders. अब जो नॉर्मल लिक्विडेशन है, नॉर्मल लिक्विडेशन में कितने दिन में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है? यहाँ 30 डेज है ना वॉलंटरी लिक्विडेशन में। हाँ सर, तो नॉर्मल लिक्विडेशन में भी है ना सब प्रोविजन 90 डेज के सर। डिस्ट्रीब्यूशन। रेगुलेशन 42 है विद इन 90 डेज, वेरी करेक्ट। यस सर। रेगुलेशन 42 सब रेगुलेशन 2, यस। इसीलिए मिला मिला के पढ़ लेना है आपको। और Yes, अगर sir. आप बुक पर लिख सकते हो, इसके ऊपर लिख भी सकते हो कि हाँ, 90 sir. डेज इन केस ऑफ लिक्विडेशन, Yes, और वहां लिक्विडेशन में आप लिख दोगे 30 Yes. डेज इन केस ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन, तो ध्यान रहेगा, है हाँ ना? सर, हाँ सर। The चलिए। liquidation cost shall be deducted before such distribution is made. The liquidator may, with the approval of the corporate person, distribute amongst the stakeholders an asset that cannot be readily or advantageously sold due to its peculiar nature or other special circumstances. Return of money. A stakeholder shall forthwith return any money. अच्छा, अगर आपसे पूछे कि इसमें वो जो चार्ट है लिक्विडेटर फीस वाला, रियलाइजेशन, परसेंटेज ऑन रियलाइजेशन, परसेंटेज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, वेदर इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन, तो कॉर्पोरेट पर्सन डिसाइड करता है ना सर? कॉर्पोरेट पर्सन डिसाइड करेगा टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ रिम्यूनरेशन, है ना? यस सर, यस सर, वो उस बेस पे भी हो सकता है, कोई और बेस भी हो सकता है, पर मंथ फिक्स्ड भी अमाउंट हो सकता है यस ना? सर। यस। Return of money. A stakeholder shall forthwith return any monies received by him in distribution which he was not entitled to at the time of distribution or subsequently became not entitled to. Completion of liquidation. The liquidator shall endeavor to complete the liquidation process of the corporate person and submit the final report under Regulation 38 within ये टाइम दे रखा है, दो टाइम दे रखे हैं। 270 days, 90 days, sir. हाँ, 270 days from the liquidation commencement date, where the creditors have approved the resolution under Clause C of subsection 3 of Section 59 or Clause C of Sub-Regulation 1 of Regulation 3, and 90 days from the liquidation commencement date in all other cases. हाँ, जो नॉर्मल लिक्विडेशन है, नॉर्मल लिक्विडेशन में कितना टाइम पीरियड है? 1 year, sir, 365 days. आपका रेगुलेशन 44 बताता है ना? अच्छा। रेगुलेशन 44 बताता है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, रेगुलेशन नंबर 44। चलिए। In the event of liquidation process continuing for more than the period stipulated in Sub-Regulation 1, the liquidator shall A. hold a meeting of the contributories of the corporate person within 15 days from the end of 270 days or 90 days as the case may be, and thereafter at the end of every succeeding 270 days or 90 days as the case may be. सर इसमें कोई लिमिट नहीं है क्या सर? क्या एवरी टाइम 270 डेज ऐसा? वो तो है, जब तक चलता रहेगा चलता रहेगा। हाँ। भाई एसेट्स तो क्योंकि liquidate ओनली करना ही वन है टाइम आप। ऐसा कुछ लिखा नहीं है इधर, ओनली वन टाइम एक्सटेंशन ऐसा कुछ लिखा ना नहीं ना, ऐसा नहीं है। है। As stipulated in Sub-Regulation 1 till submission of application for dissolution of the corporate person, and shall present an status report indicating progress in liquidation, including settlement of list of stakeholders, details of any assets अब ये that देखो, remain. तो स्टेटस रिपोर्ट कब दी है इसने? स्टेटस रिपोर्ट किस स्टेज पे दिया? कंप्लीशन ऑन लिक्विडेशन। ठीक That है, means 270 days के बाद हाँ बिल्कुल बिल्कुल और 90 days. बिल्कुल। Okay, sir. 90 डेज अगर डेट फ्री कंपनी है, Yes. और अदरवाइज 270। यस। तो एक ही स्टेटस रिपोर्ट देनी है इसको, बार बार नहीं देनी। अच्छा। चलिए। Distribution of unsold assets made to the stakeholders, developments in any material litigation by or against the corporate person, filing of and अब आप ये developments. देखिए
पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस? एक में लिखता है डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू स्टेक होल्डर्स, Yes. और एक में लिखता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसोल्ड एसेट्स मेड टू स्टेक होल्डर्स। Yes, sir. क्या फर्क है दोनों में? एक ही बात है या एक कुछ तो अलग है? डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स रियलाइज्ड, जो एसेट्स रियलाइज हुए उसका प्रोसीडिंग्स पैसा, राइट। और ये अनसोल्ड मीन्स जो नहीं बिका, जो कोई नहीं ले रहा है, हाँ, वो कोई स्क्रैप, पुरानी कार है, उनको पुराना नहीं। यस, कंप्यूटर है, पुराना यस मकान सर, है, वो सब। हाँ यस जी। सर। यस। डेवलपमेंट्स इन एनी मटेरियल लिटिगेशन बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट पर्सन। अब ये देखिए, यहां पर एक बहुत बड़ा हिंट मिलता है आपको। क्या हिंट मिलता है? कि इवन व्हेन द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस इज क्लोज्ड, लिटिगेशन अभी भी गोज ऑन। यस, लिटिगेशन चालू रह सकते हैं। यस सर, यस सर, है ना? भाई यस सर, लिटिगेशन तो आपका सिविल कोर्ट में चल रहा है, कोई किसी कोर्ट में चल रहा है, उसको तो नहीं हम कह सकते ना कि भाई तुम मैटर को जल्दी हियरिंग करो या वाइंड अप करो। वो यस, चलता यस। रहेगा उस कोर्ट में। यस। फाइलिंग ऑफ एंड डेवलपमेंट्स इन अब एप्लीकेशंस इसी फॉर। पॉइंट को और कहाँ कवर किया? डिक्लेरेशन में, रिगार्डिंग मटेरियल लिटिगेशन। यस सर, डिक्लेरेशन में क्या कहा? जो शुरू में डिक्लेरेशन दिया, वही न्यू अमेंडमेंट ना सर? हाँ, डिक्लेरेशन में जो नया अमेंडमेंट दे दिया, क्या कहा उसमें? ये कहा, डिस्क्लोजर अबाउट पेंडिंग प्रोसीडिंग्स और assessments before statutory authorities and pending litigations in इन respect of the रेस्पेक्ट ऑफ द corporate कॉर्पोरेट persons। पर्सन। यस सर। तो इसका मतलब जब शुरू किया तब भी बताया उसने पेंडिंग लिटिगेशंस कौन से हैं, है ना? यस सर। और जो लास्ट में जब कंप्लीशन रिपोर्ट दिया तब भी बताया। ठीक है, चलिए। यस। यस। Filing of and developments in applications for avoidance of transactions in accordance with Chapter 3 of Part हाँ 2 of the Code। ये भी तो इंडिपेंडेंट चलते रहता है सर, अवॉइडेंस ट्रांजेक्शंस हाँ, का भी। ये भी डिपेंडेंट चलता रहेगा। यस ठीक है, सर। चलिए। The reasons for not completing the process within stipulated time period and the additional time required for completing the हम्म process। इसमें कुछ CIRP 7 जैसा कुछ एप्लीकेशन देने का रहता है क्या सर? किसका? जैसा CIRP में 7 नहीं नहीं, वो एप्लीकेशन तो अलग अलग चीज है, इसमें यहाँ ऐसा कुछ डिले नहीं। होने से जो देते ना। यहाँ तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का रोल ही नहीं है ना। अच्छा अच्छा, यस सर, यस सर। हम्म, The status report shall enclose the audited accounts of the liquidation, showing the receipts and payments pertaining to liquidation since the liquidation commencement date. The liquidator shall file the status report with the board within 7 days of the meeting of contributories. तो ये 7 दिन के अंदर आपको IBBI को भी रिपोर्ट फाइल करनी है। यस। Yes, sir. Final report. On completion of the liquidation process, the liquidator shall prepare the final report consisting of अब आप ये audit. बताइए, जो स्टेटस रिपोर्ट है और फाइनल रिपोर्ट है, दोनों डिफरेंट है या सेम है? एंड व्हाट इज द डिफरेंस? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज वेदर देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन Yes, स्टेटस रिपोर्ट एंड फाइनल रिपोर्ट। yes, sir. Difference is there. तो स्टेटस That रिपोर्ट कब status सबमिट report is करनी है? nothing but a progress report, sir. है जी, हाँ। Status report is a progress report. This हाँ, is final is after completion, राइट। binding पूरा। तो जैसे मान लो 270 और 270 का एक्सटेंशन हुआ, उसके बाद में फाइनल रिपोर्ट जाएगी। जैसे ही 270 डेज कंप्लीट होगा तो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट जाएगी, स्टेटस रिपोर्ट जाएगी। Yes, है sir. ना? Yes, sir. चलिए। यस। On completion of the liquidation process, the liquidator shall prepare the final report consisting of audited accounts of the liquidation, showing receipts and payments pertaining to liquidation since the liquidation commencement date, and a statement demonstrating that the assets of the corporate person has been disposed of. The debt of the corporate person has been discharged to the satisfaction of the creditors. No litigation is pending against the corporate person, or sufficient provision has been made to meet the obligations arising from any pending litigation. हाँ, तो यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि लिटिगेशन अगर पेंडिंग है तो आपको एक प्रोविजन रखना पड़ेगा। प्रोविजन क्या Yes. रखोगे? कि भाई डायरेक्टर्स विल पर्सनली बी रिस्पॉन्सिबल, है ना? क्योंकि नहीं तो कंपनी का उसका तो कुछ अकाउंट बंद अमाउंट करना निकाल के पड़ेगा रखते आपको। हैं, या तो एक कंपनी का पार्ट तो ऑफ जो अमाउंट। पैसा है, दैट यू हैव टू गिव टू द वॉलंटरी कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट। Yes, sir. यस। A sales statement in respect of all assets containing the realized value, cost of realization, if any,
the manner and mode of sale, an explanation for the shortfall. If the value realized is less than the value assigned by the registered valuer in the report of the valuation of assets under section 59 3B2 or regulation 3(1)(b)(2 as the case may be. अच्छा, एक ये बात बता दीजिए कि जब स्टेटस रिपोर्ट आप देंगे तो स्टेटस रिपोर्ट में भी सेल रिपोर्ट देनी है या नहीं देनी है, या सिर्फ एनुअल रिपोर्ट के साथ ही देनी है? जब स्टेटस रिपोर्ट आपने दी, हाँ सर। दिया ना, तो स्टेटस रिपोर्ट के साथ में भी आपने सेल रिपोर्ट देनी है या नहीं? यस और नो? नो सर, उसमें जो बाकी है सेल करने की उतनी डिटेल देनी है। वो नेचुरली अपने आप ही आ गई ना, वो डिटेल्स ऑफ एनी एसेट्स दैट रिमेन्स टू बी सोल्ड एंड रियलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब में हाँ। जो सेल हुई उसकी डिटेल नहीं देनी है, जो सेल नहीं हुई हाँ, वो उसका लिस्ट ही रिपोर्ट। देना है। राइट, वेरी करेक्ट। चलिए, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद यस, पढ़िए पढ़िए। The person to whom the sale is made and any other relevant details of the sale. The liquidator shall send the final report forthwith to the registrar and the board. अब देखो, The ये भी अभी अभी तक भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को नहीं दिया, ठीक है ना? हाँ सर। अभी तक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का कोई रोल आया ही नहीं। चलिए, The अब यहाँ पर liquidator देखिए। shall submit the final report and the compliance certificate in Form H along with the application under subsection 7 of section 59 to the adjudicating authority. हाँ, यहाँ यहाँ पर पर आया आया सर। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। Yes, चलिए, sir. 39। Corporate voluntary liquidation account. The board shall maintain and operate an account to be called the corporate voluntary liquidation account with a scheduled bank, provided that until the corporate voluntary liquidation account is operated as part of the public accounts of India, the board shall open a separate bank account with a scheduled bank for the purpose of this regulation. A liquidator shall deposit the amount of unclaimed dividends, if any, and undistributed proceeds, if any, in a liquidation process, along with any income earned thereon till the date of deposit into the corporate voluntary liquidation account before he submits an application under subsection 7 of section 59. मतलब वो जो आपका डिसोल्यूशन वाला एप्लीकेशन से पहले है करना। हाँ सर। A liquidator who holds any amount of unclaimed dividends or undistributed proceeds in a liquidation process on the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India Voluntary Liquidation Process Amendment Regulations 2020 shall deposit the same within 15 days of the date of such commencement, along with any income earned thereon till the date of deposit. A liquidator who fails to deposit any amount into the corporate voluntary liquidation account under this regulation shall deposit the same along with interest thereon at the rate of 12% per annum from the due date of deposit till the date of deposit. Now, who will pay this interest of 12%? Liquidator. Liquidator. So he will be personally responsible. So Yes, it sir. cannot be included under liquidation cost. Yes, sir. Yes. A liquidator shall submit to the authority with which the corporate person is registered and the board the evidence of deposit of corporate voluntary liquidation account under this regulation and a statement in Form G setting forth the nature of the amount deposited into the corporate voluntary liquidation account and the names and last known addresses of the stakeholders entitled to receive the unclaimed dividends or undistributed proceeds. The liquidator shall be entitled to a receipt from the board for any amount deposited into the corporate voluntary liquidation account under this regulation. ठीक है, तो आपको क्या करना है? एविडेंस ऑफ डिपॉजिट देना है, स्टेटमेंट है फॉर्म जी के अंदर।
हाँ जी सर, और फिर फॉर्म एच क्या है? कंप्लायंस रिपोर्ट। कंप्लायंस है। फिर फॉर्म आई क्या है? रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल। ठीक है, Prior to dissolution of the corporate बस इतना person, ही काफी है। आगे दूसरा और देख लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो, है ना? हाँ इसमें एक अब ना हो। हाँ। पेनाल्टी है सर, एक 500 रुपीज पर फॉर्म पर कैलेंडर मंथ, ऐसा कुछ एक है। हम्म। अभी चलिए डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और इंसॉल्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन 40। अच्छा सर, where the liquidator is of the opinion that the liquidation is being done to defraud a person, he shall make an application to the adjudicating authority to suspend the process of liquidation and pass any such orders as it deems fit. Where the liquidator is of the opinion that the corporate person will not be able to pay its debts in full from the proceeds of assets to be sold in the liquidation, he shall make an application to the adjudicating authority to suspend the process of liquidation and pass any such orders as it deems fit. तो अब आप देखो, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का रोल आ गया, है ना? हाँ सर, इन केस it is being done to defraud any person, in case the corporate person will not be able to pay its debts in full। ठीक है। और तीसरा क्या था? इन केस ऑफ सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट, है ना? yes, तो फाइनल yes, रिपोर्ट का कॉपी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी देना है। yes sir. प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रिजर्वेशन ऑफ The रिकॉर्ड्स में कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करने हैं? 8 फिजिकल years, कॉपी 3 कितने years. कितने दिन के लिए? 8 और years, 3 इलेक्ट्रॉनिक, years. Hmm. इलेक्ट्रॉनिक Electronic कॉपी 8 years, physical और 3 years. फिजिकल 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन। Yes ठीक sir. है, ये हो ही गया, इसमें कोई खास बात नहीं है। फाइलिंग ऑफ Yeah. फॉर्म्स, Forms name सही है। दीज आर दी फॉर्म्स। Yes sir. कौन से फॉर्म्स हैं ये? वीएल सर वन, यही बोल वीएल रहा टू था सर मैं आपको, टेंथ, है। ये आपको बता रहा था, टेंथ हाँ डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ऐसा यही है सर। हाँ 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 हाँ। तो ये है, ये एक बात देख लीजिए, वीएल वन कब भरना है आपको? ऑन और बिफोर द 10th डे ऑफ द सेकेंड मंथ आफ्टर द पब्लिक अनाउंसमेंट। तो आपको वीएल वन भरना है। वीएल टू कब भरना है? ऑन और बिफोर द 10th डे ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ आफ्टर द यस सर, मीटिंग ऑफ कंट्रीब्यूटरीज यस सर, और रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स। यस सर। ठीक है, इसमें रीजंस फॉर डिले वगैरह हो जाएगा। फिर डिटेल्स ऑफ डिसोल्यूशन एप्लीकेशन ऑन और बिफोर 10th डे ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, यस सर, और डिटेल्स ऑफ ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑन और बिफोर 14th डे ऑफ पासिंग। यस सर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर है सर वो हाँ, लेट फीस आपका लेट फीस 500 रुपीज। 500 रुपीज पर फॉर्म पर कैलेंडर मंथ। हाँ, ये हो गया। उसके बाद में फिर आपके ये शेड्यूल्स है। तो ये आपका यस कंप्लीट हो गया वॉलेंट्री लिक्विडेशन। मैं क्या करूंगा, इसका केस स्टडीज भी आपके पास शेयर कर दूंगा, और हाँ भी सर, पूरा मटेरियल इसका शेयर कर दूंगा, विच यू कैन गो थ्रू, एंड द नेक्स्ट क्लास विल टेक फ्रॉम सेक्शन 60 ऑनवर्ड्स। यस। ठीक है।